Hello everyone, I hope you all are fit and fine. So in this video we will be studying tissue. Tissue की detailed study इस वीडियो में हम पढ़ेंगे. So let's start without wasting further time. What is tissue? Tissue is a group of cells that have similar structure and function. So what is tissue? This is a tissue, just say. एंड इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे सेल्स हैं जिन्होंने अपनी एक टीम बना ली हुई है. सो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, इज अ टीम ऑफ सेल्स विच हैव जस्ट मेड अ टीम. अब ये टिश्यूज होते कितने टाइप के हैं? इट इज ऑफ टू टाइप्स. जैसे ही जो सेल होता है दैट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. Similarly, tissues are also of two types, plant tissues and animal tissues. So, we will be studying here in this video about plant tissues and animal tissues and their types. So, let us first take plant tissue. Plant tissue two types में divided है, meristematic tissue and permanent tissue. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री सब टाइप्स, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम. सो फर्स्ट वन इज प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू के अगेन आई एम रिपीटिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री सब टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, intercalary meristem and lateral meristem. Then there comes permanent tissue. Permanent tissue is divided into two types, simple permanent and complex permanent. This simple permanent tissue is further divided into two subtypes, that is protective and supporting tissue. जो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है ना, इसका क्या फंक्शन है, जैसे कि ये टर्म ही इंडिकेट कर रहा है दैट प्रोटेक्टिव टिश्यू इज डीलिंग विद द प्रोटेक्शन. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, एपिडर्मिस एंड फेलम. देन supporting tissue is further of three types, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Then this is about the simple permanent tissue. Simple permanent tissue हमने अभी स्टडी किया है, दो तरह के होते हैं, दैट इज प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग. जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये आगे जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड, इट इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स, दैट इज एपिडर्मिस एंड फेलम. Then this supporting tissue is further of three types, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, right? Then this permanent tissue का second part है, that is complex permanent tissue. It is divided into two types, that is xylem और phloem. ये जो xylem और phloem है ना, ये these together are known as vascular bundles. These are known as vascular bundles, right? अब इनका क्या रोल होता है? Their role is to transport essential resources inside the plant body, जैसे कि water की transport, food की transport to all the parts of the plant. Who is performing this role? That is complex permanent tissue के जो दो parts हैं, xylem और phloem. ठीक है. सो अभी तक हमने क्या स्टडी किया है? जो प्लांट टिश्यू है ये टू टाइप्स का है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, देन इज लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है. देन देयर इज अ परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल परमानेंट है जो ये आगे चलकर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग. जो प्रोटेक्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज एपिडर्मिस एंड फेलम. और जो सपोर्टिंग परमानेंट टिश्यू है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज पेरेंक्hyma, collenchyma एंड sclerenchyma. Then there is a complex permanent tissue. It is divided into two types, that is xylem and phloem. ठीक है. So xylem or phloem, these are the vascular bundles which are related with the transport of the nutrients, water, food inside the
प्लांट में हमें पता है कि फूड प्रिपेयर होता है. फूड इज प्रिपेयर्ड इनसाइड द लीव्स थ्रू विच प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस. सो जो फूड प्रिपेयर हुआ है लीव्स में, वो सारी की सारी प्लांट की बॉडी के पास जाना चाहिए, देन ओनली प्लांट विल ग्रो. सो हु इज प्रोवाइडिंग द फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज जाइलम एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन सी दो पार्ट्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जो फ्लोएम है इट डील्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड दिस जाइलम इट डील्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ठीक है. नाउ this is just about the plant tissue. Now taking animal tissue. Animal tissue is divided into 4 subtypes. That is, first one is epithelial tissue. जो epithelial tissue है ना, ये भी आगे जाकर 6 parts में divide किया गया है. Squamous epithelium, cuboidal epithelium, glandular epithelium, ciliated epithelium, columnar epithelium, then is sensory epithelium. Then there is a second type of animal tissue is connective tissue. This connective tissue is divided into 3 subtypes. First one is connecting tissue, then is skeletal tissue, then is fluid tissue. जो connecting tissue है it is dealing with the binding जो सारे के सारे हमारी बॉडी है उसको, स्किन इज देयर, ऑर्गन्स आर देयर, राइट. वो सारे के सारे जुड़े कैसे होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कनेक्टिंग टिश्यू. कनेक्टिंग टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू एंड फाइब्रस टिश्यू, राइट. देन दिस स्केलेटल टिश्यू. जो स्केलेटल टिश्यू होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, बोन एंड कार्टिलेज. और जो फ्लूइड टिश्यू, फ्लूइड का मतलब है समथिंग विच इज रिलेटेड विद द लिक्विड सब्सटेंस, राइट. So fluid is divided into 2 parts, that is blood and lymph. So then comes muscle tissue, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, that is muscular tissue. This muscle tissue is divided into 3 types, skeletal, smooth and cardiac muscular tissue. Then the fourth one is the nervous tissue. This is just the introduction of the plant and animal tissues. इसकी डिटेल स्टडी हमने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करनी है, right? But now just we will be concentrating here about the types. So हमने आज की इस वीडियो में क्या स्टडी किया है, let us revise it once again. जो टिश्यू है, what is tissue? Tissue is a group of cells जिनका जो रोल होता है और जिनकी जो शेप होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, that is similar. ठीक है. जो टिश्यूज होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज. सो let us study first plant tissue. This plant tissue is divided into 2 types, meristematic tissue and permanent tissue. जो meristematic tissue is again divided into 3 types, apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. Then this permanent tissue is divided into 2 types, simple and complex permanent. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसकी भी आगे चलकर 2 पार्ट्स बन जाते हैं. दैट फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव, देन इज द सपोर्टिंग सिंपल परमानेंट टिश्यू. देन दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें क्या आते हैं हमारे, दैट इज वेस्कुलर बंडल्स. वेस्कुलर बंडल्स इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है. सो this is about the plant tissue. Then we will be studying here animal tissues in next video in detail. So just take an intro. What are the types of animal tissues? Animal tissues are of 4 types. First one is epithelial, then is connective tissue, then muscular tissue, then is the nervous tissue. Then this epithelial tissue, जो epithelial tissue होता है it is divided into again 6 types, that is squamous epithelium, cuboidal epithelium, glandular epithelium, ciliated epithelium, columnar epithelium, then sensory epithelium. ठीक है. Then this connective tissue is divided into 3 types, connecting, skeletal, fluid tissue. Connecting tissue is again divided into 3 types, areolar, adipose and fibrous tissue, right? Then this skeletal tissue is divided into 2 parts, that is bone and cartilage,
and fluid tissues are also of two types, that is blood and lymph. Then the third one is the muscular tissue. It is of three types: skeletal, smooth and cardiac muscular tissue. Then there is the nervous tissue. So that's all for today. Stay home, stay healthy. Take care.